Yes, good afternoon everyone. Welcome to the class. So the present students will enjoy the lesson. Now I am going to lock the classroom. Now no one will enter in the class. Arrange your books, copies, pens and highlighters if you have. Yes, yesterday we have completed our liberal revolutionaries and on that page we have done revolutionaries कौन थे, उनकी क्या-क्या policy थी and what they want. Okay, Gurupahul, unmute yourself. एक बच्चे को check कर ले, then we will move further. Who were revolutionaries? Can you explain in one line only? Who were revolutionaries? Ma'am, that make new revolutions. Those who bring revolution and they believe in People. they believe in. Ma'am, I don't know. Copy खोलो, cheating करेंगे. What you have written in copy? This question we have written yesterday, na? Who were revolutionaries? Yes. Now read from that. इतना time नहीं लगना चाहिए. Yesterday you were present in the class, ना Gurupahul? Yes, ma'am. हाँ तो क्वेश्चन ये मैंने बोर्ड पे शायद लिखवाया था कि डिक्टेट करके, है ना? तो हरलीन unmute yourself. Who were revolutionaries? Ma'am, revolutionaries were the nationalists who saw the creation of nation states as a necessary part of their struggle for freedom. And they believe in liberty, independence, freedom, parliament, constitution, and the value of power of people. Am I right? And they believe in nation state. They won't change. Thank you very much, Harleen. Thank you so much for explaining. Now we are going to do one thing that was very controversial. National Assembly बन गई, सेंट पॉल चर्च में सारे इकट्ठे हो गए, है ना? कौन सी पार्लियामेंट थी? What was the name of the parliament? Raise your hands. हाँ जी कशिश. What was the name of the parliament? मैम सेंट पॉल. वो तो चर्च थी ना, वेन्यू था. पार्लियामेंट का नाम क्या था? Abhijot. What was the name of the parliament? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. I'm Frankfurt. वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी. अच्छा, वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी सेंट पॉल चर्च में. मेरी बात सुनते जाना ध्यान से, because in between this is my habit that I ask question in between. Those who answer it means they are making their positive response for the session. Those who are not giving तो नेगेटिव हो जाएगा उनका, समझ गए? अच्छा, सेंट पॉल चर्च था, पार्लियामेंट लगी थी फ्रैंकफर्ट में, ठीक है? बेटा 10D do one thing. Open your book at page number 18. आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे. Figure 10. Just Karan, read the caption. It is written na, read the caption. Figure 10. Unmute yourself. Ma'am, on page number 18. हाँ जी, पेज नंबर 18, फिगर 10. फोटो के नीचे कैप्शन है, प्लीज रीड दैट. The Frankfurt Parliament in the church at St. Paul. Contemporary color print. Notice the woman in the upper left gallery. हाँ, आप भी एक चीज नोटिस करी है आपने, ये गैलरी में सारी की सारी लेडीज खड़ी हैं. ये बनी हुई ना, देखो ये देखो मैंने फोटो निकाली. सी, ये पूरी की पूरी पार्लियामेंट है, ये सब लोग बैठे हैं, ये आपको पता ये कौन है ना? ये ऊपर गैलरी बनी हुई है, देखो ये गैलरी में ना सारी की सारी वुमेन है. फिर वही कंट्रोवर्सी, women considered as passive citizen, they were not paying any kind of tax, they were not alert, active citizen, है ना? याद है आपको, ग्रेड 9 में भी पढ़ा था. इवन here also we have done in the French Revolution chapter.
तो ये फिर कंट्रोवर्सी होगी। वुमेन क्या खाली स्पेक्टेटर है? दे आर ओनली ऑडियंस। women they never allowed women to participate, उनको सफरेज नहीं था। क्लियर? नाउ shall we start reading? अभी आपको समझ आ जाएगा हमने पढ़ना क्या है। shall we start? चलो विक्रम unmute yourself। सबसे पहले तो विक्रम thank you very much for what yesterday you were absent in the class but you have done one good work that you sent your application। ये बहुत अच्छी बात है। ये देखो मैंने विक्रम की अटेंडेंस लगाई, आपको दिख रहा है? मैंने पहले ए लगाया था, दिख रहा है? फिर मैंने कट करके एल लगाया, चाहे वो छुट्टी पे था बट उसका ये पॉजिटिव ही रहा। ये वो अवेयर था, मैंने क्लास मिस कर दी तो उसको मतलब ही वाज अवेयर स्टूडेंट। चलो गुड विक्रम। चलो जस्ट करण स्टार्ट रीडिंग। द इशू Suffrage rights during the election of the assembly when the Frankfurt Parliament convened in the church और at वेट St. वेट वेट जस्ट करण वेट वेट, यही होता है जब हम क्लास में नहीं आते रोज रोज। पेज नंबर 17, वो तो मैंने ऐसे ही फोटो दिखाई आपको। वी विल रीड फ्रॉम पेज नंबर 17। जस्ट करण किसी और From दुनिया top. से आया है, किसी और दुनिया से आया लगता है। चलो पेज नंबर From 17, पेज नंबर 17 लास्ट पैराग्राफ। द इशू The issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement in which large numbers of women had participated actively over the years. Women यस had यस यस। formed अब their इसको एक और रूल नहीं own. पता मेरी क्लास का, दैट वी स्टॉप एट एवरी फुल स्टॉप। ठीक है, हर एक लाइन के बाद हम रुकते हैं। नाउ जस्ट करण ने ये लाइन पढ़ी कि एक और कॉन्ट्रोवर्शियल the issue of extending political right, one controversial thing was not given to women। women को वोटिंग राइट नहीं था, ये एक और कंट्रोवर्शियल चीज थी। ठीक है, और इसके लिए वोटिंग राइट लेने के लिए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, और जिसमें वुमेन ने पार्टिसिपेट किया इक्वल राइट्स के लिए, दैट मूवमेंट इज नॉन एज, पलक बताएगी मुझे, दैट मूवमेंट इज नॉन एज passive citizen, अरे नहीं, द मूवमेंट विच वुमेन लॉन्च फॉर द इक्वलिटी ऑफ राइट्स लाइक मेन, दिस मूवमेंट इज नॉन एज, भूल गई, चीटिंग कर ले। इसी पैराग्राफ के नीचे ग्रीन बॉक्स है, देख ले फटाफट। feminist, हाँ feminist, फेमिनिस्ट। अरे जिसमें फीमेल पार्टिसिपेट करती है वो फेमिनिस्ट मूवमेंट हो गई। ठीक है, जिसमें फीमेल पार्टिसिपेट करती है। तो ये बड़ी कंट्रोवर्सी वाली बात थी कि इतनी तरक्की करने के बावजूद भी विमेन वर ओनली स्पेक्टेटर, उनको गैलरी में खड़ा कितनी इंसल्ट फील होती है ना, तो वुमेन को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। हाँ जी जस्ट करण फर्दर बेटा। Women had formed their own political association, founded newspaper, and taken part in political meeting and demonstrations. चलो जी, उन्होंने अपनी अपनी एसोसिएशन बना ली, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट के सामने, दैट दे वांट पॉलिटिकल राइट, दे वांट सफरेज। यस बेटा। Despite this, they were denied suffrage rights during the election of the assembly. हाँ, और असेंबली के इलेक्शन के दौरान उनको ये वाला राइट नहीं दिया गया। डिनाइड मतलब नॉट गिवन। हाँ जी जस्ट करण। When the Frankfurt Parliament convened in the church at St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitor gallery. बस वो विजिटर गैलरी में उनको खड़े रखा गया। they will be considered as only visitors, only audience, only spectators, they will not participate in the political arena। हाँ जी विक्रम कंटिन्यू बेटा। Despite this, they were denied suffrage rights during the election of the assembly. डन बेटा, हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। दो कंजर्वेटिव।
पेज नंबर 18 लास्ट पैराग्राफ, दो कंजर्वेटिव। Though conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, they could not restore the old order. हाँ जी, लिबरल मूवमेंट्स को सप्रेस करना चाहा कंजर्वेटिव ने। क्यों? क्यों? आराधना यॉर्निंग कर रही है तो मैं आराधना से पूछ लेती हूँ। आराधना तो मेरी स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में है, पता है? अनम्यूट करो, इसी से पूछते हैं। अच्छा, कंजर्वेटिव पीपल ने सप्रेस करा लिबरल की मूवमेंट को, क्यों? वाई? बता पलक, क्यों कंजर्वेटिव ने सप्रेस करा लिबरल की मूवमेंट को करने देते उन्होंने जो करना था? मैम क्योंकि चेंजेस शायद जल्दी आ रहे थे। नहीं, तेरी अपनी फिलॉसफी रहती है। हाँ इशू कंजर्वेटिव को क्या पड़ी थी बीच में इंटरफेयर करने के लिबरल के? मैम शायद इसलिए क्योंकि लिबरल्स और कंजर्वेटिव दोनों अलग अलग सोचते थे। लिबरल्स वांट कि इक्वालिटी आए, फ्रीडम आए, लेकिन जो कंजर्वेटिव थे वो कंजर्वेटिज्म में ज्यादा बिलीव करते थे। दे वांट कि एक किंग का रूल हो। हाँ, जो कंजर्वेटिव थे क्योंकि वो कंजर्वेटिव थे। हाँ पलक, क्या हुआ? हाँ बता। मैम कंजर्वेटिव मोनार्क के साथ थे और लिबरल्स उनके अपोज में थे। यस, क्योंकि कंजर्वेटिव तो पुरानी ट्रेडिशन पे विश्वास रखते थे, वो कैसे लिबरलिज्म को बर्दाश्त करते? इसलिए जब जब लिबरल मूवमेंट हुई तब कंजर्वेटिव ने उनको सप्रेस मतलब प्रेस करना, उनको दबाना चाहा। ठीक है, चलो हाँ जी, नेक्स्ट विक्रम। Monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries. अब कंजर्वेटिव ने सोचा मानने वाले तो है नहीं नेशनलिस्ट, क्यों ना थोड़ी सी ग्रांट दे दे इनको। बच्चा रोता ना तो उसको छोटा सा टॉय दे देते हैं, उसको एक कैंडी एक लॉलीपॉप दे देते हैं कि चल चुप हो जाएगा, पर वो बच्चा वो खा लेता है, चुप हो जाता, बाद में फिर रोता है और उसको वो चीज लेनी होती है, वो लेता है वो चीज। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव ने क्या किया, उनको थोड़ा सा दिलासा देने के लिए ना, थोड़ी सी उनको लिबरल नेशनलिस्ट जो थे उनको क्या करने के लिए, कंसेशन देने के लिए थोड़ी सी ग्रांट दे दी कि मतलब ये चुप हो जाएं कि आपकी लिबर्टी को हम मानते हैं। बट राजा अपना तो क्राउन छोड़ेगा नहीं ना, अपना तो सिंहासन छोड़ेगा नहीं, बट थोड़ा सा लिबरल नेशनलिस्ट की उसने बात मान ली। अच्छा, ये एक चीज ना ध्यान में रखना, बिकॉज द सेम थिंग विल कम इन इंडिया चैप्टर ऑल्सो। हमारा भी बड़ा लंबा स्ट्रगल था, 1700 से शुरू हुआ था, 1757, 1764, 1857, 1920 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बड़ा कुछ हुआ था। तो इस बीच ब्रिटिशर्स ने हमें भी कंसेशन दिया था, बट उस टाइम तक हम अवेयर हो चुके थे। 1930 में जब गांधी जी थे तब हमने कहा था हमें ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें ये वाली कैंडीज नहीं चाहिए, वी वांट फुल इंडिपेंडेंस। नाउ द सेम सेंस हियर आल्सो, कंजर्वेटिव आर गिविंग सम काइंड ऑफ कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट, बट लिबरल नेशनलिस्ट को फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। हाँ जी, कंटिन्यू बेटा। जसकरण कहाँ गया? विक्रम कंटिन्यू बेटा। Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. ठीक है, फिर 1848 के बाद जितना भी ऑटोक्रेटिक हमारा रूल था, मोनार्कीज थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, उन्होंने चेंजेस इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए 1815 तक। तभी की ही बात है, वियना कांग्रेस वाली बात है। हाँ जी, कंटिन्यू विक्रम। Thus, serfdom and bonded labor were abolished both in the Habsburg
domination, and in Russia, डोमिनेशन कहाँ लिखा? डोमिनियन, dominance. डोमिनियन, डोमिनियन का मीनिंग लिखो पार्ट, एक पार्ट, एक हिस्सा, डोमिनियन। हाँ, तो अभी यहाँ पर विक्रम ने पढ़ा द सर्फडम। सर्फडम मीन्स, गुरपाहुल सर्फडम क्या होता है? सर्फडम, ये फिर गलत बात है, हर बार थोड़ा ना बताऊंगी। अर्शिया, सर्फडम क्या होता है? अर्शिया, सर्फडम। हरनूर, सर्फडम। आराधना, कैमरा ऑन। मैम सेक्सुअल लेबर। हाँ, सर्फडम मैंने स्लेव्स लिखवाया था या लेबर्स, ठीक है। चलो अब देखो, सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वाला अबॉलिशन बहुत है हैब्सबर्ग और रशिया। थोड़ा सा इनको मनाने के लिए उन्होंने कहा चलो हम लेबर और सर्वेंट खत्म कर देते हैं रशिया में और हैब्सबर्ग एम्पायर में, पूरे यूरोप में नहीं। द हैब्सबर्ग रूल्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस, और हंगेरियंस को भी, जो हंगरी में रहने वाले थे, उनको भी थोड़ी सी लिबर्टी ज्यादा दे दी 1967 तक, ठीक है। दिस मच ओनली, आज इतना ही पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना। हैप्पी के हैरान हो गए, बस मैंने 10 मिनट पढ़ाना था। हाँ, आज मैंने 10 मिनट ही पढ़ाना था, ठीक है। बट वी विल राइट वन क्वेश्चन, वही जो हमारा शुरू से चलता आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन मैं अक्सर बोलती हूँ आपको, जो मैं कहती हूँ यू विल नॉट डायरेक्टली गेट फ्रॉम बुक? किसको पता? अक्सर अक्सर मैं फ्रांस के बारे में क्वेश्चन बोलती हूँ एक। हाँ, हरलीन याद है? When I will tell you the half question, I assure you that you will complete the rest half. वो क्वेश्चन लिखेंगे आज, पढ़ना कुछ नहीं है अभी हमने। हाँ, हरजोत को पता है, गुड गुड। हरजोत, which question I usually say about France? Good afternoon, ma'am. Good I think the question is when France sneezes, the rest of the Europe catches cold. I guess this question. Palak, unmute yourself. Yes, ma'am. Do you know the question which I am going to tell you? No. अभी तो बता भी दिया हरजोत ने। हाँ जी, when France sneezes, the rest of Europe catches cold. अभी रुको, मैं आराम से लिखवाऊंगी। अरमान, अरमान, what is the meaning of this question? Unmute करो। हिंदी में बता दे, डीप मीनिंग मत बता, हिंदी में बता दे। फ्रांस नीज करते हैं तो यूरोप, अब समझ आ जाएगी, मैं एक्सप्लेन करूंगी तो। नो नो, अभिजोत, अनम्यूट योरसेल्फ। ये क्या होता है? इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। Ma'am, this line was stated by Duke Metternich, and he said this because he know that liberals will make a change in the society they have made in France, and it will be made in whole Europe. Thank you, Abhijot, wonderful answer. चलो, now open your copies, write down today's date. सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना हमने 3 मार्क्स का, ध्यान से लिख लेना, फिर मैं क्लास वाइंड अप कर दूंगी। ओके, नाउ क्वेश्चन है, when France sneezes, बेटा दिख रहा है आपको बोर्ड? Write down today's date. When France sneezes, comma, the rest of Europe catches cold. Akshit, video on beta. When France sneezes, the rest of Europe catches cold. अच्छा, ये लाइन ढूंढना कहां पर है? हमने पढ़ी भी थी। कैन यू सर्च दिस लाइन? सबको नहीं मिलेगी, देख लेना आप।
नहीं मिलेगी, बट वेट करूंगी सिर्फ 2 मिनट। देखते हैं सबसे पहले, अरे वाह हरलीन, हरलीन यू गॉट द लाइन। हरलीन अनम्यूट कर मेरा बेटा। मैम पेज नंबर 13 पे है। अच्छा, पेज नंबर 13 मुझे अभी भी नहीं मिली। सेकंड पैराग्राफ। ओके, सेकंड पैराग्राफ, 1 2 3 4 5th लाइन। हाँ जी, When France leases the rest of Europe catches cold। अच्छा, अभिजोत की एक खास बात और, अभिजोत ने ये भी बता दिया कि ये किसने कहा था, मेटरनिक ने, ड्यूक मेटरनिक ने, है ना। चलो, नाउ कंप्लीट दिस क्वेश्चन, वेरी गुड, आई एम हैप्पी विद यू टेंडी, वंडरफुल क्लास। इसका मतलब कुछ अच्छा अच्छा खाया लंच में आज, हाँ, दैट्स व्हाई यू आर गिविंग वेरी गुड एंड पॉजिटिव आंसर। थैंक यू अभिजोत। यस, क्वेश्चन इज, हरनूर खुश हो गई है। When France leases the rest of Europe catches cold। Yes, explain the statement। Explain the statement। Answer। When France leases, the rest of Europe catches cold। Justify the statement। हाँ जी, आंसर। अभिजोत कैमरा ऑन बेटा। Number 1, these were the remarks of Duke Metternich। इससे पहले इंट्रोडक्शन ऐड करनी है तो फ्रांस के बारे में कुछ भी लिख देना। यू नो मेनी थिंग्स अबाउट फ्रांस फ्रॉम ग्रेड 9, वो भी चाहे लिख देना। यहाँ भी स्टार्टिंग में बिगिनिंग में बहुत कुछ था फ्रांस के बारे में। इवन द क्वेश्चन यू हैव डन इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन द अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप, वहां से कुछ भी आप हिंट ले लेना और इंट्रोडक्शन डाल देना। आई एम जस्ट गिविंग यू द आंसर। दीस वर द रिमार्क्स ऑफ ड्यूक मेटरनिक। These were the remarks of Duke Metternich। Number 2, he was a conservative। Who believed in traditions। Who believed in traditions। Who believed in traditions। कुछ भी लिख लो, customs, culture, monarchy। Third,
The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of, क्या लिखने वाली हूं मैं यहाँ पर? One dairy milk chocolate will be awarded to those students who will answer me. यहाँ मैं क्या लिखने वाली हूँ? Of dash. देखिए तो जरा, मैं यहाँ क्या लिखने वाली हूँ? Let me check. है यहाँ मेरे इंटेलिजेंट बच्चे भी बैठे हैं. हरजोत, सोच के बोलना वरना चॉकलेट तेरे को देनी पड़ेगी मुझे. Yes. Ma'am, France. 50% right. थोड़ा elaborate कर और दे इसको. French. हाँ, Ma'am, French. French Revolution In 1789. Oh, dairy milk, yes. Correct answer बेटा. और immediate answer. सोचे बिना ही उसने आंसर दे दिया. Yes, legacy of French Revolution. मैं रेड से लिख देती हूँ. आपको याद रहेगा. This is not having. ऐसे लिख देती हूँ. ठीक है. हाँ, जो जब भी हम मिलेंगे चॉकलेट will be given to you. ठीक है. पर हाँ, मैंने साइज नहीं बताया चॉकलेट का. 10 रुपीज, 30 रुपीज, 100 रुपीज. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. आपको पता है दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट लेगेसी गिवन बाय फ्रांस, इवन इंडिया. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात सुन लो, मैं हट जाऊंगी पीछे कैमरा से, देख लेना. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज रिटन फ्रीडम एंड लिबर्टी. और ये दोनों चीजें हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की नकल मारी थी. पता है, क्योंकि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ना 1950 में, तब हमें कुछ भी नहीं पता था कॉन्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, है ना, बुक कैसे लिखते हैं. हमारे लीडर्स को कुछ भी नहीं पता था. तो वी हैव बोरोड सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन. हमने इंग्लैंड से भी लिया, अमेरिका से लिया, फिर हमने इंग्लैंड से लिया, अमेरिका से लिया, फिर हमने फ्रांस से लिया, इजराइल से लिया, इराक से लिया. सो मेनी थिंग्स वी हैव टेकन फ्रॉम अदर कंट्रीज. तो ये लिबर्टी और क्या बोला मैंने, लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, इक्वालिटी, ये हमने फ्रांस से लिया था. ठीक है. चलो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट. स्टार्ट राइटिंग फोर्थ पॉइंट. The period from 1830 to 1848 the period from 1830 to 1848 was known as, बड़ा खराब पीरियड बोलते हैं इसको, was known as the age of revolution. Was known as the age of revolution. And even in this case and even in this case the first upheaval took place in France. upheaval होता है क्रांति, revolt. Took place in France
took place in France in July 1830. In July 1830. In July 1830. Next, last point, fifth point. And the last point, fifth point. But I am going to dictate this point, fifth point. Show me thumbs up if you have done 4 points. जिनके ये 4 हो गए, show me thumbs up. Okay, thank you हरजोत, पलक, आराधना, हरलीन, दक्ष, जसकरण, हरनूर, अक्षित, अभिजोत, अर्शिया, waiting for Arman. Okay, Arman. Now 5th point, which I am going to dictate you. हाँ जी, 5th point. The July Revolution in France. मैं बोल रही हूँ, आप लिखो. The July Revolution in France. The July Revolution in France sparked an uprising. Spark बोलता है sparkling, एक चिंगारी छोड़ दी. Sparked an uprising in Brussels. अच्छा, जहां आपने ब्रुसेल्स लिखा ना, ब्रैकेट में लिखो कैपिटल ऑफ बेल्जियम. कैपिटल ऑफ बेल्जियम. When I will teach you chapter 1 of civics ना, then I will ask you. फिर मैं आपसे पूछूंगी which is the capital of Belgium. मतलब इस दिन इस क्वेश्चन को 10 दिन और लग जाएंगे, बट चॉकलेट पक्की कर लेना अपनी. फिर बहुत से लोग भूल जाएंगे, देख लेना आप. ठीक है, बहुत से लोग भूल जाएंगे ब्रुसेल्स किसकी कैपिटल है. देखेंगे आफ्टर 10-12 डेज. फिर पूछूंगी मैं आपको सिविक्स का पहले चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन ये होगा. हाँ जी, ब्रुसेल्स ब्रैकेट में लिखा कैपिटल ऑफ बेल्जियम एंड इवन इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप. एंड ये ब्रैकेट में नहीं लिखना, ब्रैकेट में सिर्फ वही लिखना कैपिटल ऑफ बेल्जियम, बाकी सारा सिंपल लिखो. यानी कि आपकी लाइन बनेगी स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स एंड इवन इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप. and even in other parts of Europe. ऐसी स्पार्कलिंग, आपको पता है स्पार्कलिंग एक बार हो जाए ना, पटाखे को जब स्पार्कलिंग लगती है तो सिर्फ एक को नहीं, पार्ट्स ऑफ यूरोप पूरे दूर दूर तक फैल जाती है वो. सो एक बार सिर्फ छींक मार दी अगर फ्रांस ने तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता था. आज भी हम लोग दूर रहते हैं ना, कोई छींक मार दे तो डर लगता है ना. पूरा यूरोप, अब तो पूरा वर्ल्ड डर गया. अब तो पूरा ही वर्ल्ड डर गया ना इस बात से. किसी को वैसे भी खांसी आ जाए तो डर जाते हैं, हम खुद डर जाते हैं, खुद अपने आप से डर लगता है हमें, खांसी भी आ जाए तो, है ना.
चलो आज बस एक ही क्वेश्चन लर्न करेंगे, एक ही क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। बट हाँ देख लेना कि वट एवर वी हैव डन अर्लियर। पलक अनम्यूट कर, फटाफट बुक बंद करती है, अनम्यूट कर जरा। मुझे बहुत जल्दी पड़ी है जाने की, फटाफट बाय 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 करती है और बुक बंद करती है। कहाँ जाना है? अब तो डिस्पर्सल होना नहीं है, लाइंस में जाना नहीं, घर पे बैठना है, यूनिफॉर्म भी नहीं चेंज करनी है, घर पे बैठना है, भागने की पड़ी होती है इसको। चलो नाउ योर होमवर्क ओनली वन क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PT1 में डाल दूंगी, ठीक है। चलो ठीक है, ओके बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जसकरण, थैंक यू दक्ष, थैंक यू बेटा, ओके ऑल द बेस्ट।